Okay, now we can talk about types of processes. So in types of processes we mainly have reversible and irreversible processes mainly. We also have quasi-static processes that we'll also see. So the idea is that suppose we have a system having some gas and mm, it is in contact with a this temperature T reservoir. Do you know the meaning of reservoir? The meaning of reservoir is that its temperature remains same. It has a lot of energy that you can't take out some energy and it will affect the temperature. You can extract out the energy, but its temperature will not going to change. So it is in contact with the reservoir, right? So this is the our system, our point of interest here. So now what I am doing, suppose I am having a piston attached with this cylinder. Okay, fine. Now the gas cannot be up like this. Okay, so what can I do? uh, Suppose this was the initial volume. Till this height the gas is filled, and suppose the volume is v is the volume. This was the initial condition at t equals 0. Fine. At time t equals 0, this is the initial condition. And what I do after 1 second, just at t equals some 1 second or some time t, what do? I just compress this piston, and after compressing this piston, suppose I have made the volume halved. Okay, so the piston has reached at this point. At this point, fine. I think this is clear. There is nothing complicated I'm doing. So the gas has been compressed. Okay, so what was the initial volume V and what was the final volume V by 2? Fine. This was the process I have done from here to here. Good. And remember that once we have reached at this at this volume V by 2, the temperature remains same T. Why? Because it is attached or it is in the contact with the reservoir. So heat will transfer from here to there or there to here depending on the temperature, but finally at equilibrium state the temperature will again become T. Remember the words are too important. Initially it was in the equilibrium state at temperature T, volume V. Finally it has reached at equilibrium state from at equilibrium state volume V by 2 and temperature T. Okay, so now if I want to plot, if I want to make a diagram, now the diagram is not PV because we don't know about pressure right now. We just know about temperature and the volume. So if I want to denote it in the diagram, this is V and this is temperature, suppose temperature T and volume V. So initially it was volume V, suppose this was the point at volume V and temperature was T. Fine. And after some time T equal to T, it has reached at half volume, so at this point from V to V by 2, or better to make it V naught so that the graph looks more easier. V naught to V naught by 2. Okay, now
this was the two equilibrium states. This is the first equilibrium state, this is the second equilibrium state. Remember, the state variable are defined only in equilibrium state. Once equilibrium state is attained, then only you can define the variables. So I have defined variable v naught by 2 and temperature at both the states at t naught. Let's give it name as t naught, t naught, t naught. Fine. So I know the variables at two different equilibrium states. What about the intermediate state? What do you mean by that? सब बिकॉज जब ये हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेस किया, तो हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन बीच में इस टाइम पीरियड के बीच में कहीं पर तो पिस्टन होगा ना बीच में. सपोज एट वी नॉट बाई 4, सॉरी 3 v0 by 4. Okay, so what do I mean by that? I mean by that is this thing. मान लो बीच में in between this compression, the cylinder will be the piston would be somewhere here. Getting my point? I'm saying that this is the final condition, this is the initial condition, but in between these two situation, the piston would be somewhere in between, and the volume is not v naught by 2. Suppose the volume is in between v and v naught by 2. Suppose that is v naught 3 v naught by 4. तो क्या ये जो स्टेट है इसके बारे में हमें कुछ पता है? नहीं पता ना, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में पता है. तो अब मुझे क्या मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ प्लॉट कर सकता हूँ क्या? Of course you can plot the 3 v naught by 4 here, but you don't know the temperature, right? 3 v naught by 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 v naught by 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, बट टेम्परेचर क्या है? बिकॉज अभी इक्विलिब्रियम पे आया नहीं है ना. ये टेम्परेचर इज नॉट t naught here. The temperature is t naught if and only if it attains the equilibrium state. But when the volume is 3 v naught by 4, we don't know what is the temperature, right? So point is that in between you do not know what is the temperature. Hence you can't plot the graph, because you must be saying that मैं तो इसको ऐसे join कर सकता हूँ. No, you can't join this, because जो बीच वाली स्टेट थी 3 v naught by 4, 3 v naught by 4 तो यहाँ पर भी हो सकता है, राइट? क्योंकि ये तो जस्ट y एक्सिस की बात है ना. 3 v naught by 4 यहाँ पर भी हो सकता है, 3 v naught by यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. बट बिकॉज वी डोंट नो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या था इस दौरान, टी नॉट था कि 2t naught था कि t naught by 2 था. हैंस यू कांट प्लॉट इट. ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड irreversible processes. Okay, because we do not know what is going to be the equilibrium state in between. I hope this point is clear. So let me write few points about it. Let me write the definition first. What is the irreversible process? It is a process during which it is not possible for the system to retrace all the intermediate states of forward direction while coming to
बैकवर्ड, ये एक किताबी भाषा है, आई मीन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि चीज़ क्या है, ये बात क्या कहना चाह रहा है। कि ठीक है, the key points are system passes through a series of non-equilibrium states, right? From initial to final इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या मतलब है इसका कि जो बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे हमने बोला कि जब वॉल्यूम 3v0/4 था, since volume we can see it is 3v0/4, but we do not know what is the temperature because the system it is not in the equilibrium. The system is not in the equilibrium, so you can't tell the temperature. So this is what it is saying, that system passes through a series of non-equilibrium states. So since it is a not equilibrium state, hence this is the system is not in equilibrium state. Fine. So one more important point you can mention here, that we cannot plot we cannot plot a continuous graph for irreversible process, क्योंकि हमें बीज की कहानी पता ही नहीं है, बीज का कुछ भी आइडिया नहीं है। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इंटरमीडिएट स्टेट बिकॉज intermediate states are non-equilibrium states, and for non-equilibrium state we do not know what is pressure, what is volume, what is temperature. On indicator diagram, जो इंडिकेटर डायग्राम है हमारा, वहाँ पर हम प्लॉट नहीं खींच सकते, प्लॉट बता ही नहीं सकते कि कैसे ये कनेक्ट करें इन दो चीज़ों को, दो पॉइंट्स को, दो स्टेट्स को, क्योंकि हमें बीज का टेम्परेचर पता ही नहीं है और इवन प्रेशर भी नहीं पता। अगर तुझे स्टार्टिंग का प्रेशर पता है, मान ले यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट किया था, इफ़ यू नो इवन द प्रेशर हियर, तो यहाँ पर फाइनली प्रेशर भी पता होगा, इनिशियल प्रेशर भी पता होगा यूजिंग सम इक्वेशंस, बट यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द प्रेशर इन बिटवीन। सो अगर हम बात करें दूसरे इंडिकेटर डायग्राम की, डजेंट मैटर कि तू कौन सा इंडिकेटर डायग्राम ले रहा है, दोनों ही कोई भी इंडिकेटर डायग्राम हो, यू कांट प्लॉट द ग्राफ। सपोज पीवी लेते हैं, पीवी डायग्राम लेते हैं, सो ऑफकोर्स इनिशियली यू नो व्हाट इज़ द प्रेशर बिकॉज वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। ध्यान रखना, मैं अगेन एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही तुझे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू पता होगी। तो मान ले पी इनिशियल पता है, वी इनिशियल पता है, टी इनिशियल पता है, टी इनिशियल पता है, फाइनली भी तुझे पी फाइनल पता है, वी फाइनल पता है बिकॉज वॉल्यूम बिकम हाफ, वी फाइनल पता है, और टी फाइनल भी पता है। ओके, these 2 points are you know, initial and final points you know, but you do not know what is happening in between, so you can't plot any graph out of this. Okay, so this is the essence of irreversible processes. और जो ये definition लिखा रखी है ये वाली, this definition, what does it mean कि मान ले तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। Now if you want to go from here to back to the initial position, you can go, but you will not use the same path.
You will not use the same path. That is what you are saying. You can go, but you do not, because you do not know intermediate points. Then how will you go from here to here with the same path? So that is what here written. It is a process during which it is not possible for the system to retrace all the intermediate state for of forward direction. बीच में जो भी प्रोसेसेस, जो भी ये डेटा पॉइंट्स थे, मान ले कुछ भी मान लेते हैं, सपोज कर लो ये वाले डेटा पॉइंट्स थे. अब if you go to the backward direction, it is not possible for you to go to the same data points. This is the meaning of irreversible processes. I mean, this is another kind of definition. You can use any of them to understand it. Fine. Now we will go for the reversible processes. ठीक है, हम सेम सिस्टम को लेते हैं जो हमने टेम्परेचर फिक्स किया था यूजिंग रेजरवॉयर. फाइन, यूजिंग रेजरवॉयर वी हैव फिक्स्ड सम टेम्परेचर लाइक दिस. ओके, now we do not have piston, but we have some this kind of system, piston, that is you can't you don't compress it by hand, but you can put some weight over it. Suppose you have put some stone in order to compress it. Okay, so assumption here is that this piston, assumption is piston is frictionless. Also the wall of the cylinder. Are frictionless. Okay, so this is the assumption we are making. Okay, now see, this is the initial condition, initial situation we know. Suppose, and this is the equilibrium state, so we know the state variable. So we know state variable, suppose P initial, V initial, T initial. Fine, we know these things. Now what do? I just put a very small, infinitesimally small point particle over it, like this, very small, like a sand, the particle of a sand, so small कि ये इस पिस्टन को कंप्रेस कर सकता है, उतना स्मॉल है. ठीक है, एंड आफ्टर compressing this piston there will be some work, I mean there will be some change in the volume, and that change in the volume will create some heat, and after creation of heat there will be some communication with this reservoir. तो बात ये है कि हम फिर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए वेट करेंगे. ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ओके, तो नाउ वी हैव गॉट अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट्स. Did you get the point? हमने वेट किया है, हमने we are doing. Okay, then in assumption you can write the second thing, that we compress gas infinitesimally small, infinitely slowly, you can write in that way. We compress the gas
infinitely slowly, or rather it is not an assumption but it is a thing what we are doing. Okay, this is the main idea behind the reversible process. फाइन. तो नाउ इस ये करने का फ़ायदा ये है कि जब हमने इन्फिनिटेसिमली स्लोली ये प्रोसेस किया तो वी कैन हैव द इन बिटवीन स्टेट, द स्टेट आफ्टर 1 second, आफ्टर फर्स्ट स्टेट टू सेकेंड स्टेट, आई नो द वेरिएबल नाउ, आई नो द वेरिएबल नाउ. दिस इज द एडवांटेज. ओके, मान लो दिस इज P1 V1 T1. We have waited for some time. Look, important point to discuss. हमने पहला सैंड पार्टिकल रखा, कुछ सिस्टम में चेंज हुआ, और जब वो चेंज होना बंद हो गया, जब प्रेशर और वॉल्यूम सब फिक्स हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया. हमने तब तक वेट किया और हमको जो भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर मिला हमने उसको नोट डाउन कर लिया. ओके, सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेप है ना, एट T इक्वल टू T1 फ्रॉम टू T इक्वल टू T2 हमने एक और सैंड पार्टिकल रखा, स्मॉलर, एंड देन अगेन वी हैव सीन कि क्या चेंजेस आते हैं प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, तो वी कैन हैव द डेटा पॉइंट्स P2 V2 T2, एंड आई हैव रिपीटेड दिस process putting a particle of sand again and again and again for a long time. Okay, हम ये करते गए कब तक, जो हमारा पहला सिचुएशन था कब तक हम करते गए कि हमने इसके वॉल्यूम को आधा बनाना है. लाइक दिस, हमने पहले भी वॉल्यूम को आधा बनाया था लेकिन एक बार में कंप्रेस कर दिया था सो दैट वी कैन गो फॉर द फाइनल वॉल्यूम V/2. बट अभी हमने ये प्रोसेस को इन्फिनिटेसिमली स्लो कर दिया, एक एक सैंड हम डालते गए ऊपर से और हमने इसके वॉल्यूम को V/2 कर दिया. बट अभी फ़र्क क्या है कि नाउ सपोज आई हैड टू पुट अ लॉट ऑफ स्मॉल सैंड आफ्टर गेटिंग दिस वॉल्यूम V/2. ठीक है, तो अभी द फाइनल डेटा पॉइंट्स यू ऑल्सो नो what is the final data points now. P final, V final, T final, you know these things now, and V final is V/2. You can write it V/2, but I'm not writing right now. Fine, so this is the process we have done. Now the interesting thing is that कि अगर बीच में कहीं पे भी आ जाए, मान लो हम ये दो प्रोसेस पे हम ध्यान देते हैं कि जब हमने एक सैंड के बाद दूसरे सैंड पार्टिकल को डाला तो इसका कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ. ठीक है, और हमने इक्विलिब्रियम स्टेट नोट कर ली. अगर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, अब अगर मैं इस एक सैंड पार्टिकल को हटा दूँ, इफ़ आई रिमूव दैट वन सैंड पार्टिकल, इट विल गो टू द सेम प्रीवियस स्टेट. इट कैन रिट्रेस द पाथ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, अगर हम उसी प्रोसेस को, जैसे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब मैं यहाँ से एक एक सैंड पार्टिकल को निकालना स्टार्ट कर दूँ, सेम इन्फिनिटेसिमली स्लो प्रोसेस है, देन व्हाट विल हैपन कि वी विल हैव द सेम डेटा पॉइंट्स. यही डेटा पॉइंट्स को मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी. दिस इज वाई वी हैव मेड दिस अजम्पशन दैट देयर इज़ नो friction between the cylindrical wall and the piston. और इसको लिखने का एक और तरीका है कि there is no dissipation of energy, और there is no dissipative force. कोई ऐसा फोर्स है ही नहीं जो एनर्जी को लूज कर सकता है. तो और कोई फोर्स जहाँ पर एनर्जी लूज ही नहीं हो सकती है, तो ऑफ कोर्स एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो जितना हमने इसको कंप्रेस किया था एक पार्टिकल डालने में और एक पार्टिकल को हटाने में, उतना ही कंप्रेशन वो रिवर्स हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा उसका. तो ऑफ कोर्स ये लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो इसीलिए बोला जाता है कि वे रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट प्रैक्टिकल प्रोसेसेस, दीज आर आइडियल प्रोसेसेस. ओके,
These are ideal processes. Fine. So let me write the definition first.